Hello everyone, welcome to online classes for class 11. Today we start a new chapter, that is unit and measurement. So in this chapter, first we start with the what do you mean by physical quantity? For physical quantity, whatever we are able to measure in terms of physics, the quantities which are we able to measure, these all are physical quantity. Like we can measure force, we can measure distance, we can measure time, we can measure energy, we can measure angular speed, we can measure torque, we can measure electric field. So whatever we can able to measure, these all are physical quantity. Are you getting my point? Whatever we are able to measure, they all are physical quantity. Next is what is unit. Unit is defined as the standard of measurement. Unit is defined as the standard of measurement. Means whatever we measured, that physical quantity must have some unit in terms of SI unit, in terms of CBS unit, and then again they are divided into particular form, that is called the derived unit and fundamental unit. So whatever we are able to measure, they all are physical quantity, and the standard of measurement of that quantity is called the unit. Now unit is divided in two forms, that is the fundamental unit and the derived unit. So first of all, what is fundamental unit? Fundamental unit, number one is that means unit is basically two parts. One is the fundamental unit and the second one is the derived unit. What do you mean by fundamental unit? Fundamental unit are those units which express themselves. That means suppose you want to measure length. So to measure length you need scale, but you not need any swatch. That means similarly, if you want to measure time, you need watch, not a scale. That means time is a fundamental unit. For measurement time of time, only time is required. Means the instrument by using which we can measure the time. Similarly, to measure length, you need only the length instrument, not the time instrument. Are you getting my point? Similarly, if you want to measure the mass, you need the weight machine, not the time. So these all are fundamental units, means which are measured by themselves only. They are called the fundamental unit. Now what do you mean by derived unit? Derived unit are those physical quantity. To measure this derived unit, you need the fundamental units. Means you need the help of this fundamental physical quantities. I give you an example. Like suppose you want to measure speed or velocity. So what is the definition of speed or velocity? Distance by time. So to measure distance, you need a meter or length, and to measure time, you need a watch. That means how you measure the speed. Suppose an object moving from A point to B point, the distance is 100 meters. So first you need a scale in which you can measure the distance, and you need the time. Let the time is 10 seconds. So what is your speed? 100 meters covered in 10 seconds. That means 10 meters per second. So you understand, to measure speed, you need distance and time. Similarly, if you want to measure acceleration, you need velocity by time. So distance by time, that is distance by time square. So you need length as well as time. Force, you need force into mass into acceleration. So you need mass, you need distance, you need time. So that means they all are derived units. So which are derived unit? To measure those unit, if you need or if you require this fundamental units
they are called derived unit. And what are the fundamental units? They are expressed by themselves. For them to measure them, no other unit required. So they are called the fundamental unit. Hope you understand this. Okay, now the next important part is system of unit. What do you mean by system of unit? A complete set of base and derived unit is called system of unit. A complete set of fundamental unit and derived unit, or base unit and derived unit, is called system of unit. So a complete set, what do you mean by complete set? That means by using that set for that particular form, you can measure the all of this unit. Like if we use for example CGS, it's a complete set of system of unit, one type of system of unit, centimeter, gram, second. So it's a set of unit in which you have length, you have mass, you have time. So from this, by using this, you can measure length, you can measure mass, you can measure time, you can measure speed, you can measure acceleration, you can measure force. Are you getting my point? You can measure torque, but you are not able to measure the temperature. So it's not for everyone, but in a particular range, you are able to measure all this thing. You are able to measure all this thing. So that's why it's a set. You understand? Then by using which you, for a particular range, you can able to measure everything. You can able to measure everything. That is called a system of unit. A complete set of base and derived unit is called system of unit. Now this system of unit is I think 3 types. Number 1 is CGS, number 2 is MKS, number 3 is FPS, that is centimeter, gram, second, number 4 is meter, kilogram, second, and this one is foot, pound, second. So we all know this three, and the most important one is the SI system, which is called International Standard of Unit, or Standard of International System of Unit. Okay, so this one is very, very important. This is called the International Standard of Unit, or Standard of International Unit. This one is very, very important, and on the basis of that, just for a minute. Okay, so in this SI system, these are the main units. Why I am saying this? These are the main unit because they have some supplementary units also. So these are the main units. They are mainly 7 main units. So physical quantity, you have 7 physical quantity: mass, length, time, temperature, current, luminous intensity, amount of substance. Without seeing it or by closing your eyes, you can say it: mass, length, time, temperature, current, luminous intensity, and amount of substance. Mass, length, time, temperature, current, luminous intensity, and amount of substance. Now for mass, the name of unit is kilogram. For length, the name of unit is, we use meter. For time, we use second in SI system. For temperature, we use Kelvin. For current,
we use ampere. For luminous intensity we use candela, and for amount of substance we use mole. Now for this mass we use kilogram. In terms of symbol, which is very very important, we have to write small kg. For length we have to use small m, meter. For time we have to write small s, second. For temperature we have to write capital K. For Kelvin. For current, ampere, we have to write capital A. For luminous intensity, candela, we use capital C, small d. This symbol is very very important. For amount of substance, MOLE, we use MOL. In some book they are used N or M also, but we mostly use this mole, MOL. So these are the 7 basic fundamental unit. Why I am saying these are the basic? Because with this, apart from this, you have 2 units. Apart from this, you have 2 units which are called supplementary unit. So supplementary unit number one is plane angle, and number 2 is solid angle. For plane angle, name of unit is radian, and for supplementary unit, steradian. We can write it rad, and we can use it SI, steradian. Yes, and by the symbol we also use theta on this, but not necessarily we always use theta, but radian, rad, and steradian. Now my question is that why they are supplementary unit? That is very very important. Why they are supplementary unit? Suppose we consider an angle. Theta is the angle, and we know the radius is r, and this is the arc length, right? This is the arc length. So what is the definition of angle? Angle is the arc length by radius. So S by r. Now what is the SI unit of length? Meter. What is the SI unit of radius? Meter. So meter cancel. So that means they don't have any unit. But still we use unit that is called radian. Why? Because it's a ratio. For example, what is the circumference of a circle? You say 2 pi r. My question is why 2 pi r? Why 2 pi r? Because as it is in 2-dimensional plane, a full circle is 2 pi, that is S by r. So what do you mean by S? 2 pi into r. So I'm getting my point. Now r is how much? Suppose r is 2 meters. So circumference is how much? 2 pi into r. R is 2. So you have 2 into 3.14. That pi is 3.14. That is the radian value, not the degree. Pi, you have 2 values. One is the 180 degree, and one is the 322 by 7. That is approx 3.14 radian. So here we use the radian, and that radian into 2. So what we have, so you understand why this one is very very useful. We frequently use this angle. And second one, and here one more thing, here that S is the length. So basically we divide length by length. That is very very important. We divide length by length. Now the second one is for solid angle. If we suppose a cone
let this area S, this is the area, this angle is called the solid angle. If we suppose the slant is R, so the solid angle, which we can write by this symbol, last one is theta, this one is called the omega. This is the area by R square. So area by R square. Again, area is meter square, R is meter square, but area is meter square, R is also meter square, meter square cancel. So we use it steady here. Yes, sir, steady here. So why the area of a sphere? Why the area of a sphere is 4 pi square? The area of the sphere is 4 pi r square. Because if we suppose a solid sphere, its solid angle is 4 pi. How? देखो एक इजी तरीका बता रहा है. एक एप्पल लो, इस एप्पल को ऐसे लो, एक चाकू लो, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, कितना टुकड़ा हुआ? सो इफ यू कैलकुलेट इट 1 2 3, देखो जब मैंने फर्स्ट बार टुकड़ा किया 2 पार्ट हुआ, फिर जब मैंने ऐसा टुकड़ा किया 2 पार्ट हुआ, फिर जब मैंने ऐसा टुकड़ा किया तो 2 का डबल 4 हुआ, फिर जब मैं ऐसा किया 4 का डबल 8 हुआ. अब एक निकालो, ये जो एक निकालोगे इसका शेप कैसा होगा? इसका शेप होगा ये है और ये ऐसे 90 डिग्री. सो ईच इज 90 डिग्री, ईच इज 90 डिग्री, ईच इज 90 डिग्री. आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? ईच इज 90 डिग्री, उस ईच इज 90 डिग्री. ये कैसे दिखने में दिखेगा? ये लगेगा देखने में ये जो कोना है ऐसा दिखेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो कोना है ऐसा दिखेगा, ईच शेप. सो दिस ईच शेप इज 90 degree, each shape is 90 degree. So what we can say, each shape is 90 degree. So what we can say, so 8 into pi by 4, pi by 2, that is 4 pi. इसलिए 4 pi अगर solid angle एक space का होता है, so 4 pi is s by r square. So you understand s is 4 pi r square. So that's the area of a solid sphere is, surface area of a solid sphere is 4 pi r square. Okay, now some information I just want to discuss. Characteristics of standard unit. Number 1, it should be well defined. To understand what do you mean by well defined, what do you mean by 1 meter, you can understand. What do you mean by 1 kg? You can understand. So it is well defined. It should be proper size. Very small or very large size of the unit may causes inconvenience. Means in case of 1 meter, if we use 1 micrometer, so that means it is inconvenience to use. For जैसे तुम लोग ट्रेन का टिकट काटते हो तो उसमें किलोमीटर में लिखा रहता है, अगर वो सेंटीमीटर में लिखा है तो उसी में पूरा टिकट भर जाएगा. सो यू अंडरस्टैंड कि प्रॉपर शेप एंड साइज जरूरी है. इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल. ये इजीली एक्सेसिबल का मतलब है तुमको जहां पे ये जरूरत पड़ा तुम इसको कैलकुलेशन करके समझ सकते हो. अच्छा मतलब ये है. इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेस विदाउट एनी डिफिकल्टी. जब भी तुमको जहां पे जरूरत पड़े तुम इसको चेक करके बता सकते हो. एंड इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम, प्लेस एंड फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा. देखो फॉर एग्जाम्पल सपोज तुम सिलीगुड़ी में रहते हो और तुम घूमने के लिए गैंगटॉक गए हो. हालांकि आज के डेट में अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है. आफ्टर 3-4 महीना तुम लोग घूमने जा सकते हो. सो सपोज तुम लोगों ने घूमने के लिए गैंगटॉक किया और तुमने अपना पापा को बोला, पापा मेरे लिए एक नाइकी का शू लेके आना गैंगटॉक के शोरूम से. तो तुमने, पापा ने बोला तुम्हारा पैर का साइज क्या है? तुमने बोला 7 नंबर. तो पापा ने 7 नंबर का साइज लाया. तुम क्लास 11th में पढ़ते हो. पापा ने जब लाया पता चला वो तुम्हारा छोटा भाई जो 3 में पढ़ता है उसके लिए है. तुम बोलोगे ये कैसे हो गया? अगर यहाँ का टेम्परेचर मानो जब 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, मानो गैंगटॉक का टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो लेंथ टेम्परेचर कम और लेंथ छोटा हो गया, मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अगर हो जाए तो गैंगटॉक में टेम्परेचर घटने के कारण लेंथ घट जाएगा. तो तुम्हारा जो 7 नंबर है अब वो टेम्परेचर घट गया है
तो लेन के 7 नंबर घट के तुम्हारा छोटा भाई का हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। सो यू अंडरस्टैंड इट डज नॉट वैरी विथ लेंथ, इट डज नॉट वैरी विथ टाइम, इट डज नॉट वैरी विथ स्पेस। सबके साथ ये सेम रहेगा। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ standard unit. Next is the advantages of SI system. Obviously, as we use this is the best, as we said this is the best system, so it must have some advantages. Number one, it is a rational system of unit. Number two, it use only one unit for a given physical quantity. That is very very important. It use only one unit for a given physical quantity. I just give you one example. जैसे देखो एनर्जी या वर्क डन एक है और एक है मानो टॉर्क। दोनों का मतलब है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अभी मैं इसे ज्यादा नहीं बताना चाहता हूं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। Now for work done, Newton, distance is Newton. For torque also Newton meter. So now you are confused. जहाँ पे ये work done जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये जो टॉर्क है, this torque is a vector quantity. Vector. So work done is a scalar quantity and torque is a vector quantity. Although they are look like same, both are the force and distance या displacement, and distance लिखना ठीक नहीं होगा, displacement. Both are so that's why work into distance, force into displacement we use joule, unit of energy we use joule, and for torque we use Newton meter. अब मानो तुमको वर्क डन पूछा है, एवरीथिंग यू आर डूइंग राइट, द वैल्यू इज 3 × 10⁴, जूल के जगह पे तुमने न्यूटन मीटर लिख दिया तो एग्जामिनर का पूरा हक है उसको काट देगा, सट्टा हक इतने रख, समझा? जूल की जगह पे तुमने लिखा न्यूटन मीटर तो वो काट देगा, क्यों? क्योंकि जहां तुमने न्यूटन मीटर लिखा मतलब वो समझ गया टॉर्क। और सिमिलरली अगर तुम्हें टॉर्क लिखना है और तुमने जूल लिख लिया तो वो भी काट सकता है। मेरा बात समझा? तो तुम्हारा जब वर्क डन होगा तो एनर्जी का फॉर्म में है, तुम्हें जूल ही लिखना पड़ेगा, और अगर टॉर्क में है तो न्यूटन मीटर ही लिखना पड़ेगा। और एक मजा की बात देखो, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा न्यूटन मीटर, इसके बारे में बाद में देखेंगे। अगर मैं इसको mn लिख देता तो ये हो जाता, m का मतलब है मिली, मतलब 10⁻³ न्यूटन। तो ये दैट्स व्हाई द यूनिट एंड डायमेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। nm मतलब न्यूटन मीटर, लेकिन तुम अगर mn ऐसे लिखोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा मिली न्यूटन। हाँ, अगर तुम वर्क डन है तो तुम्हें जूल लिखना पड़ेगा, न्यूटन मीटर लिखने से नहीं चलेगा। फिर अगर टॉर्क है तो तुम्हें न्यूटन मीटर लिखना है, जूल लिखने से नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू SI unit, if they are two different physical quantity, yes, work done and torque, they are two different physical quantity, and as they are two different physical quantity, their SI unit must be different. So this one is joule, this one is Newton meter. Hope you understand. Next one is, this system of unit is a metric system. That means all multiple and submultiples can be expressed in terms of 10. So you understand, metric system means whatever be the value, mostly that's multiplied by 10. For example, if you write 1 kilojoule or kg, that is if you want to convert it to gram, to 10⁻³ gram. Are you getting my point? So this is the power suffix. पावर जो है वो तुम्हारा क्या है, 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा। दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज कोई चाइना से आया और यहाँ पे बोला जाता है आलू को मेजर करना है किलो में, चाइना वाला आके बोला मुझे पोटैटो दे दो छाऊ छाऊ छाऊ। अब छाऊ 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 क्या है तुमको समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, तुमको किलो है तो किलो ही बोलना पड़ेगा। तो किलो का मतलब क्या है, इंटरनेशनल, तुम वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओ एक्सेप्ट दूसरा प्लैनेट, क्योंकि उसका में भी अलग से ऐसा सिस्टम हो सकता है। इन दिस प्लैनेट, इन अर्थ में
तुम कहीं भी जाओ, किलो का मतलब सब किलो ही समझेगा, मीटर का मतलब सब मीटर ही समझेगा, ग्राम का मतलब सब ग्राम ही समझेगा. सो दैट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. Okay, the next important one is, as it is a metric system, so that means we can use power of 10. So how we use it, it's very very important. Power of 10, you can say 10 का दम, you can say 10 का दम. So power of 10, if you write 10 to the power 12, that is tera, represented by capital T. Tera, capital T. Tera मत लिखना, okay. 10 to the power 9 giga, represented by capital G. 10 to the power 6 mega, represented by capital M. देखो ये यूज होता है टेराबाइट. तुम लोग सुना होगा हार्ड डिस्क का मेमोरी कितना है तुम्हारा, हार्ड डिस्क का मेमोरी तो 2 टेराबाइट. पेन ड्राइव में होता है 64 गीगाबाइट. Now mega is used especially in electricity, megawatt electricity. Now kilo is represented by small k, represented by small k, not the capital K. If you write capital K, it indicates Kelvin. Okay, the small k. Next is 10 to the power 2 hecto, represented by small h. 10 to the power 1 deca, represented by small da. Next is 10 to the power 0 base unit, as it is a base unit, so we start from here. Now the 10 to the power minus 1 dc is represented by small d. Centi किसी को देना मत, centi किसी को देना मत. Centimeter is represented by small c, not capital C. Then 10 to the power minus c is represented by milli, so you understand small m. 10 to the power minus 6 micro, it is represented by the sign, this is called mu. Okay, mu. Then 10 to the power micro, represented by mu. 10 to the power 9 nano, represented by n. Pico, 10 to the power minus 12, represented by pico, small p. Femto, 10 to the power minus 15, is represented by femto, small f, which is using atomic structure femtometer. And 10 to the power minus 18, represented by Otto, represented by A. So this symbol is very very important, and we frequently use this symbol. Tera is represented by capital T, giga is represented by capital G, mega is represented by capital M, kilo is represented by small k, hecto is represented by small h, deca is represented by da. Base unit का कुछ नहीं है. Deci is a small d, centi is small c, milli is a small m, micro is mu, nano is n, small n femto is f, and auto is a, pico is p. So देखो इसका एक और मतलब है कि जब हम लोग कोई यूनिट लिखते हैं, अगर जब हम लोग कोई यूनिट लिखते हैं तो कैपिटल के बाद, जैसे न्यूटन मीटर, कैपिटल के बाद हम लोग स्मॉल को लिखता है, सो दोनों यूनिट में कैलकुलेट होगा. लेकिन अगर पहले स्मॉल फिर कैपिटल आता है, सो दैट मीन्स ये जो पहला वाला जो है स्मॉल और ये स्मॉल जो है इस पावर में आ जाएगा. I'm getting my point. My next topic is, which is very very important, is the dimension. So basically, what do you mean by dimension? देखो definition क्या बोलता है? The number of times a fundamental quantity is contained in the given derived physical quantity is called dimension. मतलब the number of time, देखो the number of time
a fundamental quantity contained in the given derived physical quantity is called the dimension. मतलब suppose मुझे फोर्स का डायमेंशन चाहिए. फोर्स का मतलब क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम. वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम. तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाई टाइम. एक्सीलरेशन क्या हो गया? डिस्टेंस बाई टाइम बाई टाइम. सो डिस्टेंस बाई टाइम स्क्वायर. सो यहाँ पे क्या हो गया? मास डिस्टेंस बाई टाइम स्क्वायर इज द फोर्स. तो फोर्स देखो क्या बोला था? नंबर ऑफ टाइम्स फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो यहाँ पे कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व है? मास, डिस्टेंस एंड टाइम. मास कितना बार यूज हुआ है? एक बार. नंबर ऑफ टाइम्स, मास कितना बार यूज हुआ है? एक बार. डिस्प्लेसमेंट कितना बार एक यूज हुआ है, या डिस्टेंस कितना बार यूज हुआ है? एक बार. टाइम कितना बार यूज हुआ है? इनवर्स 2 बार. सो यू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय डायमेंशन. द नंबर ऑफ टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. मतलब जब भी मैं किसी भी चीज का डायमेंशन निकालूंगा, मुझे सबसे पहले क्या पता चलेगा? मुझे सबसे पहले क्या पता चलेगा कि वो कौन कौन फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है और वो कितना बार करके यूज हो रहा है. यही मेरा मेन मोटिव है डायमेंशन निकालने का. डायमेंशन निकालने का मेन मोटिव क्या है? कि नंबर ऑफ टाइम्स फिजिकल क्वांटिटी कितना बार यूज हुआ है और क्या क्या हुआ है. इस डायमेंशन को हम लोग जो लिखता है वो थर्ड ब्रैकेट में लिखता है. कन्वेंशन. तो अब देखो, मास के लिए हम लोग ऐसा यूनिट क्या यूज करते हैं? केजी. लेकिन डायमेंशन में हम लोग मास के लिए यूज करेगा कैपिटल एम. लेंथ के लिए ऐसा यूनिट क्या है? मीटर. लेकिन यहां पे हम लोग लेंथ के लिए क्या यूज करेगा? कैपिटल एल. एंड थर्ड ब्रैकेट. टाइम के लिए ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड. यहाँ पे हम लोग टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? कैपिटल टी. करंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एम्पियर. यहाँ पे भी कैपिटल ए ही यूज करेंगे. टेम्परेचर के लिए क्या यूज करते हैं? केल्विन. यहाँ पे क्या यूज करेंगे? के ही यूज करेंगे. ल्यूमिनेस इंटेंसिटी के लिए क्या यूज करते हैं? कैंडेला. सीडी. यहाँ पे सीडी ही यूज करेंगे. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या यूज करते हैं? मोल. यहाँ पे मोल ही यूज करेंगे. तो देखो, द नंबर ऑफ टाइम्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी कंटेन. तो तुम्हारा ये साथ में सब फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब यही सबसे ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज है 7. बाकी जितना है वो सब 3 है. वो सब में 3 है. ये सबसे सबसे एडवांस, सबसे नया वाला है, जिसमें टोटल के टोटल 7 इन्वॉल्व है. यही 7 हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटीज है. बाकी जो 2 है सप्लीमेंट्री यूनिट कोई डायमेंशन में नहीं आएगा, क्योंकि उसका कोई डायमेंशन नहीं है. सप्लीमेंट्री यूनिट ऐसा यूनिट में आएगा, लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट डायमेंशन में नहीं आएगा. डायमेंशन में फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. तो फंडामेंटल क्वांटिटी यही 7 है. तो तुम्हारा डायमेंशन में सिर्फ यही 7 का डायमेंशन होगा, और किसी का डायमेंशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि है ही नहीं. जो भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आएगा इस 7 के ऊपर बेसिस करके ही आएगा. तो इस हिसाब से अगर मैं फोर्स का डायमेंशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए एल, एंड टाइम के लिए T-2. I'm getting my point. मास के लिए m, लेंथ के लिए l, एंड टाइम के लिए T⁻². Okay, now this one is very very important. I know some of you know some about this SI unit and dimension of some basic physical quantity. तो देखो, बेसिक जो 7 है उसका हमें SI यूनिट भी पता है, 7 का हमें डायमेंशन भी पता है. तो वो 7 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है. तो हम लोगों ने लेंथ से शुरू नहीं किया, क्योंकि अगर मैं लेंथ से शुरू करना चाहूँ, चलो कर देता हूं. लेंथ का SI यूनिट है मीटर, डायमेंशन हो जाएगा L.
एरिया अगर हम पूछे, एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया मीटर क्यूब, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो डायमेंशन इज एल क्यूब। अगर हम डेंसिटी का बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, रिप्रेजेंटेड बाय रो, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। सो ऐसा यूनिट में हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, और डायमेंशन में हो जाएगा एम एल माइनस, होप यू अंडरस्टैंड। इसके लिए एल क्यूब और इसके लिए दिस, हम लोग डायरेक्ट जो डायरेक्ट लिख सकते हैं वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। 5 नंबर में स्पीड और वेलोसिटी हम लोग लिखेगा डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। सो हम लोग लिख सकता है एसआई यूनिट में मीटर पर सेकेंड और लेंथ बाय टाइम। सो व्हाट वी कैन राइट, एल टी माइनस 1 acceleration a, that is velocity by time, speed by time। तो डायमेंशन में क्या होगा, एल टी माइनस 1 बाई टी, सो व्हाट वी कैन राइट एल टी माइनस 2, एंड ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब मुझे एक्सेलरेशन मिला, साथ में हम लोग लिख सकते हैं फोर्स। फोर्स में देखो क्या लिखेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का डायमेंशन एल, एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस 2, सो मास एल टी माइनस 2। ऐसा यूनिट जो है न्यूटन अंकल को रिस्पेक्ट देने के लिए फोर्स का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनका है, सो न्यूटन। ऐसा यूनिट इज न्यूटन। डोंट राइट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो बच्चा लोग लिखता है, अभी तुम लोग क्या लिखोगे, न्यूटन। और एक बात देखो, if you know how to find out, then don't mug up it, okay, just try to understand the relation. If you try to understand the relation, then easily you can find out this dimension। 8 में है जैसे एनर्जी और वर्क डन, एनी वर्क डन और एनी एनर्जी, एनी वर्क डन और एनी एनर्जी इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन यहां से ले लो, एम एल टी माइनस 2, डिस्टेंस के लिए एल, सो व्हाट वी हैव एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। 9 नंबर पे लिखो पावर, पावर क्या हो जाएगा, एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम। सो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, टाइम के लिए टी। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। ऐसा यूनिट लिखेंगे वाट, किसी को लगाना मत, किसी को लगाना मत। इसके बाद हम लोग और छोटा छोटा चीज में जाते हैं। एंगल, ये तो मालूम ही होगा, एंगल हो जाता है रेडियन। ऐसा यूनिट, नो डायमेंशन। हमने एंगल क्यों यूज किया, क्योंकि एंगल के ऊपर बेस करके कुछ डायमेंशंस आता है। 11th नंबर पे वी कैन राइट angular velocity represented by omega, that is angular displacement by time, angular displacement by time। So angular displacement SI unit is radian, so SI unit is radian and time के लिए second, और dimension angle का dimension, time का dimension t, so angular इसका dimension जो होगा t minus 1। frequency, frequency is 1 by time, so इसके लिए हम लोग लिखेंगे डायमेंशन में t माइनस 1। देखो सेम डायमेंशन, ऐसा यूनिट भी सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हम लोग हर्ट्ज लिखते हैं।
एक्चुअली फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन है कि ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद एक और छोटा सा है, इसको भी लिख लो, कभी कभी जरूरत पड़ता है, वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ का मतलब होता है लेंथ, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर, डायमेंशन हो जाएगा एल। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी के बाद हम लिख सकते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा दैट इज ओमेगा बाई टाइम। सो ओमेगा के लिए क्या हो गया, t माइनस वन बाई टी, सो क्या हो गया t माइनस 2, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 14 नंबर ना 15, मोमेंटम, इसको लीनियर भी पढ़ा जाता है, मोमेंटम is represented by p, that is mass into velocity. So mass का डायमेंशन क्या है m, velocity का डायमेंशन क्या है l minus 1. So what we have, we can write ml t minus 1. ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, kg मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, इसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसमें रेडियस ऐड हो जाता है, सो mvr, मतलब ये मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्प्लेसमेंट, या इसको पोजीशन भी बोला जाता है। सो इसका डायमेंशन हो गया ml t minus 1 into L, that is ml square t minus 2, ऐसा यूनिट हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो, सॉरी सेकेंड। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम के बाद इधर क्या बचा, देखो नेक्स्ट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आई डोंट नो द नंबर, कैसे याद रखोगे, देखो सपोज यू हैव टू पार्टिकल ऑफ मास m1 and m2 separated by distance r from +9, gravitational force is directly proportional to the product of the two particles and inversely proportional to the square of the separation. So when you equalize m1 m2 by r square, so g is called universal gravitational constant. सो इसका जो यूनिट होगा, देखो न्यूटन डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर, इसका वैल्यू होगा 6.67 10⁻⁻11। तो डायमेंशन कितना होगा, न्यूटन मतलब mlt minus 2, डिस्टेंस l स्क्वायर, kg मतलब m स्क्वायर। So what you have m minus 1 L cube t minus 2। इसके बाद है सरफेस टेंशन। देखो सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है कि surface tension is a property of a fluid. Surface tension is the property of a fluid due to which what happened कि it will try to minimize its surface area, मतलब ये spherical shape में रहना चाहता है। So अगर मैं एक solution लूँ, so bubble लूँ, तो देखा गया है इसका जो नॉर्मल है इसके नॉर्मली फोर्स लगेगा। तो सरफेस टेंशन इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ
डायमेंशन क्या हो गया ml t minus 2 by l, that is l0 t minus 2. उसके बाद है स्प्रिंग कांस्टेंट, एक स्प्रिंग है, अगर मैं इसको फोर्स दिया तो ये इलोंगेट करेगा. सो व्हाट हैपन, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन. व्हेन यू इक्वलाइज यू यूज ए कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट. सो फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस, तो इसका भी ऐसा यूनिट देखो ml t minus 2 by l. so what you have ml0 t minus 2. अब मजा का बात देखो, both are the same dimension, spring constant and this both are the same dimension, but their SI units are different. so यहाँ पे हम लोग SI यूनिट में लेता है न्यूटन पर मीटर और यहाँ पे लेता है kg पर सेकेंड स्क्वायर. Okay, so the next one is torque. It is represented by tau, that is equals to force into displacement. So what is the dimension of force? ml t minus 2. What is the dimension of distance? L. So what we have ml square t minus 2, and SI unit is Newton meter. So torque, energy, work done, they all have the same dimension. That means they all are used by the physical quantity mass, length and time, but their dimension are different because they are different physical quantity. Next, suppose we consider about the charge. The definition of current is rate of flow of charge particle, means q by t. So q equals to it. So I current, one of the 7 basic SI unit, ampere time, and by SI unit is coulomb. Next is voltage. Voltage or potential equals to work done by charge q. So V equals to W by q. Work done is force into displacement. So force is ml t minus 2, displacement is L, and charge is 80. So what you have m l square t minus 3 a minus 1. Now 21, from Ohm's law we know V equals to IR. So R is equals to V by I. What is the dimension of voltage? m l square t minus 2 a minus 1 by ampere. So m l square t minus 2 a minus 1. So देखो, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है and if you know the some basic dimension like force का dimension क्या है, work done क्या है, force into displacement, charge क्या है, current क्या है, rate of flow of charge, so you can find out the dimension of any one. इसके बाद देखो, अच्छा इसका SI यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है ओम, represented by ohm meter. Now 22, resistivity, इसको भी रो से रिप्रेजेंट किया जाता है. अभी हमें मालूम है फ्रॉम क्लास 10, रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी लेंथ बाय एरिया, रो एल बाय ए. सो रो क्या हो गया, आर ए बाय एल. सो ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर. सो ऐसा यूनिट हो गया ओम मीटर. अच्छा, डायमेंशन के लिए देखो क्या चाहिए, डायमेंशन के लिए रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या है, m l square t minus 2 a minus 1. एरिया का डायमेंशन है l square, लेंथ के लिए l. सो मुझे क्या मिलेगा, m l cube t minus 2 a minus 1. इसके बाद जो है नेक्स्ट इज प्लैंक्स कांस्टेंट. तो देखो, प्लैंक्स ने बोला था एनर्जी इज इक्वल्स टू h न्यू. h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का एनर्जी क्या है, जूल. h फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, 1 बाय टाइम. टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड. तो h क्या हो गया, जूल सेकंड. वैल्यू क्या होता है, 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड इज द यूनिट. तो जूल का डायमेंशन क्या है, m l square t minus 2, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और सेकंड के लिए क्या होगा, t.
सो क्या हो गया ml² t minus 1 as the dimension of Planck's constant. Next is very important, that is coefficient of viscosity. तो देखो coefficient of viscosity ये भी एक फ्लूइड का नेचर है. होता क्या है, फ्लूइड जब फ्लो होता है तो फ्लूइड का जो नेचर है ये फ्रिक्शनल नेचर है, मतलब एक लेयर दूसरा लेयर को क्या करता है, अपोज करता है. और जब एक लेयर दूसरा लेयर को अपोज करता है तो उसमें एक ये आता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी पर यूनिट हाइट dv by dy. सो इसको जब हम इक्वलाइज करते हैं हमें मिलता है एक कांस्टेंट dv by dy. ये जो dv by dy है इसको बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट. सो इटा क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. तो देखो फोर्स चेंज इन हाइट या डिस्प्लेसमेंट एरिया वेलोसिटी. सो फोर्स के लिए mlt-2, डिस्टेंस के लिए l, एरियाज के लिए l², वेलोसिटी के लिए lt-1. सो मेरे पास क्या मिला, m एक l कट जाएगा, l कर दो, m l-1 t-1. अच्छा, इसका SI यूनिट इसका SI यूनिट देखो, कोई इसको kg पर मीटर पर सेकेंड यूज करता है, लेकिन ये इसका एक्चुअल SI यूनिट नहीं है. इसका एक्चुअल SI यूनिट है पॉइजन, और इसका SI यूनिट, और इसका CGS यूनिट है पॉइजन, CGS यूनिट. एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है PL से. सो 1 PL मतलब पॉइजनिंग, that is 10 पॉइजनिंग. इसके बाद देखो एक है प्रेशर. जानबूझ के इसको छोड़ के रखा है. प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. तो आप सबको मालूम ही होगा, फोर्स मतलब mlt-2, एरिया मतलब l². सो ml-1 t-2 इज द डायमेंशन. और इसका जो SI यूनिट होता है ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इससे रिलेटेड दो चीजें, एक है स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज बाय ओरिजिनल, जैसे लेंथ का चेंज बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. सो स्ट्रेन जो है यूनिटलेस है, नो डायमेंशन. एंड नो यूनिट. ये क्या है, चेंज बाय ओरिजिनल. सेकेंड जो है स्ट्रेस. स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया. सो फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब सेम m l²t-2 by area, mlt-2 by area. So ml-1 t-2. देखो इस स्ट्रेस का मतलब क्या है, if you put some force in a object, so it will deform. So the deform per unit area, जो फोर्स लगा रहे हो, फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसके कारण वो डिफॉर्म हो रहा है, अगर हम उसको फिर वापस दे दें तो वो अपना जगह फिर रिगेन करता है. तो इस डिफॉर्मेशन में जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगता है उसको बोला जाता है स्ट्रेस. तो बेसिकली देखो प्रेशर एंड स्ट्रेस सेम चीज है, क्योंकि स्ट्रेन जो है यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो प्रेशर एंड स्ट्रेस जो है वो सेम थिंग है. अब देखो नेक्स्ट इज हुक्स लॉ. हुक्स लॉ क्या बोलता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, अगर हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ बढ़ाएंगे मतलब स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा. मतलब फोर्स ज्यादा देंगे या प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेंगे तो उसका डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, कम करेंगे तो कम होगा. तो विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. देखो ये सब का जो ज्यादा डिटेल है जब हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे. अभी हम लोग को स्पेशली इसका सिर्फ डायमेंशन निकालने के लिए कैसे टेक्निक हम लोग यूज करेंगे ये हम लोग सीखेंगे. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो स्ट्रेस इक्वल्स टू ए कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन.
ये जो कांस्टेंट है मतलब क्या हो गया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये जो कांस्टेंट है इसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये तीन तरह का होता है। एक होता है यंग्स मॉडुलस, एक होता है बल्क मॉडुलस, एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग्स मॉडुलस लेंथ के लिए होता है, बल्क मॉडुलस वॉल्यूम के लिए होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिफॉर्मेशन अगर हम टैंजेंशियल फोर्स लगा। तुम लोग अभी इतना कुछ जरूरत करने का जरूरत नहीं, तुम सिर्फ ये याद रखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, स्ट्रेस और प्रेशर, ये सब का सेम डायमेंशन है। तो डोंट कंफ्यूज। तुम्हें अगर बल्क मॉडुलस पूछेगा या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछेगा या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछेगा या यंग्स मॉडुलस पूछा या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा, तुम लोग सोचोगे क्या है, कहाँ से आया, कुछ नहीं। याद से इतना रखो यंग्स मॉडुलस अभी के लिए फॉर दैट टाइपिंग, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, ये सब का जो डायमेंशन है वो प्रेशर है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब mLT minus 2 by L square, that is m L minus 1 T minus 2, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आज का क्लास इतना ही है, ये थोड़ा ज्यादा लेंदी हो गया। इसके बाद वाला जो क्लास सब है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पहला वाला क्लास थोड़ा कम इंटरेस्टिंग है ये वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए था, बहुत सारा बेसिक चीज चाहिए था। अगर ये तुम लोग के पास आ गया है, और स्पेशली जितना डायमेंशन आज हम लोगों ने किया इतना अगर कर पाते, और भी बहुत सारा डायमेंशन है विच इज रिलेटेड टू 12, कुछ 11th का भी है। जैसे मैंने पूरा हीट को इग्नोर कर दिया है, हीट में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी है, ये सब को हम लोग ने बाद में करेगा, तुम लोग इसके ऊपर देगा नहीं। मेनली इस 11th का ये इस इनिशियल पार्ट के ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर ज्यादा रहता है, तो इसमें जितना भी सारा क्वेश्चन देगा हम लोग करेंगे। अगर बाद में कभी कोई डायमेंशन के ऊपर आया तो हम लोग उसको डिराइव कर लेगा। फिलहाल अगर इतना भी डायमेंशन अगर तुम लोग मुंह पे याद रख सकते हो, इसके लिए याद मत रखना, जस्ट जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना। अगर ये तुम लोग को हो गया, इसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन सबसे इजी और सबसे आसान लगेगा। और अगर ये नहीं याद रहेगा तो यूनिट एंड डायमेंशन सबसे फालतू लगेगा। और अगर ये पूरा जो डायमेंशन है एंड ऐसा यूनिट तुम याद रख सकते हो तो यूनिट एंड डायमेंशन सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे जल्दी करने वाला। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।